if you are a CFA or FRM or maybe an MBA Finance or MS Finance or a CA or a B School graduate, then this is the perfect video for you, and you need to watch it till the end. In today's time, as we can clearly see, students are getting more and more equipped with the major certifications, that too at a very early age, just with the vision of getting a good job in the finance industry. Every student has a vision, a dream, and they plan all these courses and certifications as per that. And I can say one thing with confidence, that there are many who even after getting these certifications are not able to get a breakthrough in this industry. Why? Because they miss out to invest their precious time in learning and practicing the most important and required finance skills, which are necessary for every finance professional, जो कि हर finance professional को आनी ही आनी चाहिए, उसका कोई substitute नहीं है. And many students miss out to invest their time in that kind of skills. The world of finance revolves around the Microsoft Excel. Excel is like the language for the finance professionals, and other skills such as financial modeling, valuation, equity research, fundamental analysis, all these are alphabets of this language. So इन skills को equip करने का तो एक बहुत बड़ा challenge है ही है, बट उससे भी बड़ा चैलेंज है एक ऐसी जगह ढूंढ पाना जहां आप इन स्किल्स को प्रैक्टिस कर सको. अ प्लेस where you can work upon these life projects, where you can nourish your skills. That is to get an internship in the industry, to practice those skills. So how to overcome these challenges? Well, मैं यहाँ आपको problems गिनवाने के लिए तो आया नहीं हूँ. Problem तो आपको already पता है, and maybe आप problem face कर रहे हो. I am here with the solution, as always. So if you are someone who is looking to develop the right set of skills to become ready for the finance industry, then do watch this video till the end. Hello everyone and welcome back to EduCradle. I am Naman Jain, the co-founder of EduCradle, and in this video I am going to guide you on how you can make an amazing profile by adding the relevant set of skills which will get you amazing opportunities in the finance industry. So इस वीडियो को लाइक करो and don't forget to subscribe EduCradle. इसी वीडियो में हम बात करेंगे सारी इंपॉर्टेंट स्किल्स की और कैसे आप उन स्किल्स को इक्विप कर सकते हो इन द बेस्ट पॉसिबल वे, एंड कैसे आपको इस इंडस्ट्री में एक कोर फाइनेंस इंटर्नशिप मिलेगी विद अ कोर फाइनेंस कंपनी. सो आपको इस टॉपिक पे कोई भी और वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑल योर क्वेरीज विल बी सॉर्टेड आउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. पहले एक बार प्रॉब्लम को ढंग से समझ लेते हैं. वेल, इन वेरी सिंपल टर्म्स प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स को चाहिए इंटर्नशिप, स्टूडेंट्स को चाहिए एक्सपोजर बिफोर दे अप्लाई टू एनी फाइनेंस इंडस्ट्री फॉर अ जॉब, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, राइट. हर किसी को एक एक्सपोजर लेना, एक प्रैक्टिकलिटी समझना, एक इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव समझना, एंड उनके पास जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल्स है, उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीख लेना बहुत ही नेसेसरी है बिफोर दे स्टार्ट देयर करियर. सो वो कैसे होगा, एक प्रॉब्लम है. सेकेंड प्रॉब्लम इज कि students are also not aware about what sort of skills they should equip. कौन से skills actually उनके पास होने चाहिए जिससे उनका प्रोफाइल स्टैंड आउट करेगा और कंपनीज उनको इंटर्नशिप देने के लिए अग्री करेंगी. देखो, बहुत सिंपल सी बात है, राइट. फाइनेंस इंडस्ट्री में जॉब मिलना इज मच ईजियर देन फाइंडिंग एन इंटर्नशिप, एंड इसका ना एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है. इफ आई गिव एन इंटर्नशिप इन माई कंपनी ऑल्सो, आई लुक एट द कैंडिडेट एंड आई अश्योर दैट उस कैंडिडेट को सारा काम पहले से आता हो. She already knows how to do the job, and if they perform well in that particular internship, I'll definitely pursue them to get a full-time job in the same company, in my company. और इसी सिमिलर तरीके से बाकी सारी कंपनीज का भी प्रोसेस काम करता है कि वो आपको इंटर्नशिप में आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज करते हैं एंड फर्दर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आगे ऑफर करते हैं. टू क्रैक एन इंटरव्यू फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंस जॉब, it is very important for the candidate to be highly equipped with the finance and analytical skills. You know, to be able to prepare the necessary Excel modules, to be able to analyze the company's financial statements is a very important and basic thing which a company looks for into an employee. And to make you a pro in such skills, we have curated a complete investment banking and financial modeling course in which all these skills will be covered, and you will get a chance to learn and being mentored by the real investment bankers working in the best of finance firms. And not only that, once the content of the course is completed, we'll help you out in preparing your resumes, also prepare you for the interviews with the companies. Each and every candidate will get a placement, a guaranteed placement for 2 months internship with boutique investment banks and research-based finance firms. So it's a complete package to make you an asset for the finance industry. So click on the link in the description box and become what you always dreamt of. So this video covers
all the details about this course, watch this video till the end, click on like and share this video, and don't forget to subscribe EduCradle. So you need to be rightly skilled to get an internship. कोर फाइनेंस इंटर्नशिप्स में सिस्टम ऐसे ही काम करता है, राइट? सो हाउ टू लर्न एंड प्रैक्टिस दीज स्किल्स, दैट इज द मेन क्वेश्चन. आंसर इज द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स एट EduCradle. This program is designed in a way to help you out in equipping these necessary skills. See, it is a 3 month course in which your live and online session takes place on weekends, Saturday and Sunday, so that it does not disturb your routine classes if you are having any, or any job if you are pursuing. So वो schedule आपका disturb नहीं होगा, and you can attend the live classes in the weekends. In any case you miss any class, you always get the 24/7 access on the EduCradle portal for all the videos of live sessions. The best part about the course is that we have hired investment bankers and corporate experts as a faculty to train you out throughout the journey of this 3 month course. पूरे 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ आप पढ़ोगे, उनसे सीखोगे कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या क्या काम किया है, एंड कैसे इन स्किल्स ने उनको हेल्प की, एंड वो कैसे इन स्किल्स को यूज़ करते हैं अपने रूटीन टास्क में. That is what you will be learning in this 3 months course. And the main focus of these faculties is to give you exactly that what is required in the industry. Now, what all skills will be covered in this course? So we will start with advanced Excel, because Excel, as we talked about, is the main thing, the most important base which you need to learn. So the course will start with the advanced Excel. Then we'll be discussing a lot of financial concepts like dew point analysis, time value of money, beta, etc, etc. And then we'll move on to important financial calculations such as loan tables, future and present values, multiple calculations of the internal rate of returns, and pension calculations, etc. Then the next concept would be financial modeling. Then we'll discuss about equity research, then valuations, then merger and acquisition analysis, leverage buyout analysis. And not only these financial skills, but you will also be trained accurately by the industry experts on how you can present all of yourself onto that particular page which is called CV. Because that is the most important thing that creates the first impression in the eyes of the recruiter, right? So how you can present yourself in the best possible manner will also be taught by us. And before you get your interviews for the internship placement, you will get 2 rounds of mock interviews with the industry experts who will train you perfectly to answer all the necessary questions, who will help you out in understanding the perspective of the recruiters, and who will help you out in clearing the interviews for the placement of the internship. ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपकी प्लेसमेंट हो जाती है एक इंटर्नशिप के लिए, जो कि कोर फाइनेंस कंपनी में होगी, एंड यू विल बी गेटिंग अ कोर फाइनेंस रोल फॉर अ 2 months पीरियड. यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या ये इंटर्नशिप्स पेड होती हैं? यस, every internship placement we give to the students is a paid internship. So हर किसी student को paid internships मिलेंगी after completing the course. Till now, hundreds of students have gotten the placement internship from our institution, and over 50% of those students have also received a full-time job offer from the same company. That means वो students ready थे internship के लिए, उन्होंने skills को सही से acquire कर लिया था, and internship में उन्होंने अच्छे से perform किया, इसीलिए same company ने उनको full-time offer भी दिया. So working with a core finance firm for a period of 2 months adds enormous value to your CV. That is what you look for throughout the process. जॉब स्टार्ट करने से पहले अगर एक्सपोजर मिल जाए ना, देन यू हैव अ बेटर क्लैरिटी कि आप किस तरीके की जॉब लेना चाहते हो, एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोफाइल इज सूटेबल फॉर यू. और हाँ, दिस इज अ गारंटीड इंटर्नशिप. Guaranteed internship means every student in that particular batch will get an internship. It's not a placement assistance. It's a guaranteed placement. And how do we do that? Well, we have a dedicated placement team. And the most important thing which helps us to maintain that track record is we never enroll more than 10 students in a particular batch. एक बैच में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स होते हैं, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. पहला बेनिफिट, इट इज़ ईजियर फॉर द स्टूडेंट्स एंड द फैकल्टी टू कनेक्ट वेल विद ईच अदर. फैकल्टी इज एबल टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट इंडिविजुअली. बहुत बड़ा बैच साइज होगा तो फैकल्टी कर नहीं पाएंगे, बट 8-10 स्टूडेंट्स में इट इज ईजिली मैनेजेबल फॉर देम, एंड दे आर एबल टू फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स. सो दिस इज लाइक the one-stop solution for all the major problem of yours. You will get the best of the skills, and you will get an opportunity directly to work with a core finance company. To find more about the course, you just have to go to the description box. वहाँ पे एक link है, उस पर click करके you will be redirected to the EduCradle website where you can find all the relevant details about the course. वहाँ पे सारी डिटेल्स चेकआउट करो. वहीं पे आपको बैच के डिटेल्स भी मिल जाएंगे कि नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट हो रहा है एंड आपको उसके लिए क्या करना है.
Alright, so let me take off for now. I will see you in the next video. Till then, bye bye, take care. Keep growing, keep upskilling.